Hi students, hi everyone. Yeah, I guess I'm live now. So, you guys quickly tell me that how are you all and how's everything going? And in like quite in some time, I'll start with today's live. Okay. थोड़ी देर में लाइव स्टार्ट करते हैं. So you guys must have understood by now that what we are going to do in today's class. You have seen this page, this web page I've already shown you in the last video. So we are trying to create this sort of page, like a page similar to this. Okay, and in yesterday's class we have gone through all the learning concepts, or you can say the theoretical part, which includes all the learning concepts and all the coding concepts that you are going to new learning and coding concepts that you are going to learn in this project. Okay, so we have gone through that, and we'll quickly start with the and I have like taught everything, like every theoretical thing by now. So what we are going to do is we are basically going to start with this okay, we are going to start with coding. So today we are going to start coding together. So like first I will tell you like we will divide this page into different sections, and then I will tell you that what you have to do for a particular section, and then we can do. Okay, good afternoon others, and let me quickly like I want all you guys to please quickly say hi so that I can like understand who all are here in the class, and then we'll start with today's session. So let me start by dividing the page into multiple sections so that you can understand कि हम कितने section में अपने page को divide करेंगे, और you can understand कि हम कहाँ header बनाएंगे, footer बनाएंगे, कितने section बनाएंगे, कितने divs create करेंगे. So ये चीज़ आपको पता चल जाएगी. Yes Rohan, I will be having another live at like from 5 p.m. to 6 p.m. So 5 p.m. से 6 p.m. वाली live में we are going to discuss. I'm going to tell you about the next tournament that is going to happen, and yeah, syllabus and everything that you guys will like get to know like after an hour. So we'll be having a live session maybe after an hour or on Monday. So maybe after like 5 to 6 अभी या तो हम बता देंगे, या तो फिर on Monday 5 to 6 please be there, and I will tell you everything about the tournament, the next tournament that is basically going to happen on 26th of February. Okay, 26th of Feb को ये tournament होगा, and we are going to discuss in detail about that in another video. Okay, for now let's focus on this project. Okay, so guys, first thing first is the header thing. So this image that you are seeing right now on the screen, I'm marking with pink color. I hope that you guys can see this color on the screen. If you're not able to see color, please let me know, I'll change the color. Okay, so okay, so let me just get another one maybe. I hope now it's visible, quite visible. So this image that you are seeing right now on the screen, this is our header. हमने header में एक image डाली है. So the image that we will create a header section. हम एक header section बनाएंगे. Okay, हम एक header section बनाएंगे and उसमें हम वो ये image डालेंगे. Okay, now after that we are going to create a section. You have like heard, you have studied about header tag, then you have also studied about section tab, right? सेक्शन टैब के बारे में भी पढ़ा है आपने. सो देन वी विल क्रिएट अ सेक्शन टैब, एंड इनसाइड दैट सेक्शन टैब वी विल हैव एवरीथिंग yeah. So from this line, like from this black container, this container till नीचे तक, like till the last, like this container is also inside a section tab. then इसके नीचे वाले भी container, ये भी हमारा section tab के अंदर रहेगा. then इसके बाद we will have okay, just give me a second. Yes, we will have another containers like these containers where we have written. Okay, so all of this will be in a section tab, and section tab के अंदर हम multiple div tags create करेंगे. So let's see what all are the different tags that we are going to create for a div tag. So basically first of all I would want you guys to understand that okay, that ये जो यहाँ से जो आप देख रहे हो, from here till the end, like let me go in the end. So मैंने आपको header tag बता दिया. See, this is the footer tag, ये जो created by Sadaf है. This is the footer tag, this is a footer tag, and we have a header tag. ठीक है, हमने header और footer बता दी. इसके बीच में whatever it is, all of that is a section tag. ठीक है,
पूरा हमारा सेक्शन टैग है एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन बेसिकली हाउ यू विल अंडरस्टैंड द सेक्शन टैग एंड हाउ यू विल बेसिकली सेक्शन टैग में भी मल्टीपल डिव्स कैसे क्रिएट होंगे, ठीक है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि हमारा सेक्शन टैग है, तो ना इसके अंदर वी हैव दिस वन डिव टैग, ठीक है। एक हमारा ये डिव टैग है, एक हमारा डिव टैग होगा जिसमें ये सारे मल्टीपल बटन्स जो हमने बनाए ये आएंगे, ओके, नेविगेशन बार बेसिकली सॉर्ट ऑफ। देन एक div tag है for this, okay, then again we have one div tag for this picture, then okay, this is also divided into multiple rows। ये हमारा एक रो बनाने के लिए एक div tag यूज होगा, ठीक है। ये एक div tag हुआ to create this row। now for this we again have a div tag and then for this we will again have a div tag, ठीक है। देन दूसरी रो बनाने के लिए हमने फिर अगेन एक डिव टैग क्रिएट किया, ओके। यहाँ पे हम मल्टीपल क्लासेस और आईडीज के यूज करेंगे टू गिव देम स्टाइलिंग। वी विल ऑल्सो यूज float and clear properties that we have like seen in the past things, okay। so we'll start with the coding and ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम कोड से स्टार्ट करते हैं। as like we will move ahead, you will understand more things, but for now you already know that आपको एक पेज में सबसे पहले आपको ये इमेज डालनी है, ओके। देन आपको ये हेडर क्रिएट करना है, फुटर क्रिएट करना है एंड सेक्शन क्रिएट करना है। हेडर में ये इमेज डालनी है, फुटर में क्रिएटेड बाय सदफ डालना है एंड सेक्शन में ये डालना है। नाउ वन थिंग हियर दैट यू शुड लाइक सी इज हेडर में और आपके फुटर में जो भी आपका और यू कैन से एवरीथिंग हैज दैट इज लाइक दैट यू आर सीइंग इन दिस, वो सेंटर में है। तो यहाँ पे हमने CSS में डिजाइनिंग की होगी ये सेंटर एंड बैकग्राउंड कलर सबका ब्लैक है। सो दीज आर सम स्टाइलिंग एलिमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डू वंस वी विल स्टार्ट विद द कोड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। सो फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ index.html file। So here you can see we have an index.html file and we'll start over here। So to start, you know that first thing that we do is doc type, right? And after this like these are the basic things, let's do this। then we have HTML tag and then inside this we have a head tag, then inside this head tag we have multiple things like title, right? Title of the page is okay, let me just write it over here only। let's put the title over here only। title हमने डाला okay DC Comics, okay। then we will link the CSS file also। so let's do one thing, let's create the CSS file over here। so to create that, you know how to create that, style.css, enter, and let's create this, okay। so for this what I'm gonna do is I'm gonna have a link tag, okay। here we are going to also write the relation, basically href, first of all href। so href is style.css। in the meanwhile if anyone is having any doubt you guys can ask, okay। href हो गया, then relation style sheet। this is the basic thing that we do in every basically every code। then head के बाद we focus on body of our code, okay। then here I told you that we are going to create 3 sections, okay। one is header, one is section and one is footer। so let's create all of them and you guys, I would request you guys to please like code with me only, okay। इसके अंदर हम img tag यूज करेंगे because इसके अंदर हम एक इमेज डाल रहे हैं, if you remember img tag, okay। so वो मैं अभी ऐड कर देती हूँ इमेज एंड उसके बाद हमारा एक सेक्शन क्रिएट होगा, राइट, एक सेक्शन टैग एंड देन लास्ट में we again have a footer tag, okay।
Okay, so footer tag mein, if you remember, what I have done is I have only written made by Sadaf Khan. So let me first do that, made, because that is something that is very simple. So we will just complete the footer tag, and now let's focus on the header tag. So for the okay, I'll wait for you guys to like tell me if you have any doubt or anything, and if you have any doubt then please ask me. Otherwise, just I would request you to please open VS Code and start making this project with me. I'll wait for you guys to cover me up, like to come to this point. Okay. Okay, in the meanwhile, I'll wait for your doubts and then I will start with like coding again. So you guys have, if any one of you have any doubt, please ask. Okay, so in the meanwhile, let me just add the image over here. So I don't think so that anyone has any doubt. So let's just add the image over here. So for adding image, we have image src equals, and let me just paste the link. So basically this is the link that I have for the image जो मैंने डाली है. आप कोई भी image ढूंढ सकते हो नेट से, and you can use that. And let me put the width at as 100%. width को मैं 100% कर दे रही हूँ. Okay, because I want the full image. Okay, cool. So header clear हो गया कि header हमने कैसे click किया है. Okay, others, no doubt. Okay, now after the header we are going to go inside the section. So as I told you, inside the section first thing that we have is the div tag, और div tag के अंदर वो जो black वाला portion था. So let me take you back to the page. So now we are going to basically focus on, okay, so now basically we are going to focus on, okay, now we are going to focus on this black portion. You guys can see this black portion. हमने ये image डाल दी अपनी. Now our focus is to create this portion, right? So for that what we have to do is we have to create a div tag. Inside that div tag ये first line जो है ये मैं h2 और h1 heading tag में डाल सकती हूँ, and this line I can put inside a paragraph tag. Okay, so that's how this portion will be completed. We are making the page step by step. Okay, हमने header tag कर दिया, हमने सबसे लास्ट का footer बना दिया. Now our main like work is to make this. Then after this we are going to create this. Okay, and then after this we are going to create all of these things. Okay, all of these tags. and उसके बाद फिर हम इनको like proper पहले हम इनको IDs वगैरह देंगे, so that we can create a navbar. इनको bookmarks वगैरह देंगे हम. Okay, and और like यहाँ पे हम IDs देंगे so that we can relate them like that. and उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग पे उसके बाद फोकस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट. ओके, so for that what we are going to do is, students, okay, so this is the thing, and अब हमें section में एक एक portion पे focus करना है. So the first thing that as I told you that the first thing will be the div tag section के अंदर, जिसमें हम एक h1 tag use करेंगे and एक हम वो use करेंगे basically. ओके, एक हम h1 टैग यूज करेंगे एंड एक p टैग यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग अ div टैग. ओके, एंड इसके अंदर हम एक h1 टैग यूज करेंगे, h1 टैग and one okay, in this h1 tag let me take the text that is written in the page also, must read collection. So we are going to write must read collections over here. I'm taking the text from the page only. Okay, it will be. So this is something that I'm going to write in h1 tag, and after that I'm going to write something in p tag. Okay, so p tag create करते हैं, and p tag के अंदर we are going to write the whole paragraph that is given on the page only.
Okay, so let's write the whole paragraph. Okay. Okay, so after this we are going to create another div tag. This is the whole paragraph that we have written. Okay, so this is first thing. Okay, cool. I hope that this is like quite simple and you have understood this thing. Now let's go, let's do one thing. मैम ब्लैक पोर्शन इमेज में ही है? नहीं राहुल, ब्लैक पोर्शन इमेज में नहीं है. इमेज इज द हेडर, यू कैन सी हियर. इमेज हमारा हेडर है. उसके बाद हमने एक अलग सेक्शन क्रिएट किया है जिसके अंदर हम वो पहले ब्लैक पोर्शन डालेंगे, देन वो जो नेविगेशन बार है उसके बटन्स बना के नेविगेशन बार डालेंगे अपना, एंड देन उसके बाद अलग अलग डिफरेंट रोज बनाएंगे. एंड हर रो में एक जो हमने नेविगेशन बार में जो भी हमने पॉइंट्स डाले हैं, जैसे सुपरमैन वर्सेस शैज़म और वंडर वुमेन, तो उनका टेक्स्ट और उनकी इमेज ऑल्टरनेट करके हम डालेंगे. सो वो सब हमारा सेक्शन के अंदर आएगा. एंड लास्ट इज द फुटर. तो हमने यहाँ पे हेडर कंप्लीट कर लिया, फुटर कंप्लीट कर लिया. अब मैं आपको वही ब्लैक पोर्शन बनाना सिखा रही थी. सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ओपन दिस थिंग विद अ लाइव सर्वर. ओके, इसको ओपन करते हैं लाइव सर्वर से एंड लेट मी शो यू गाइज व्हाट वी हैव गॉट टिल नाउ. ओके ओके, सो या, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड टिल नाउ. अभी तक हमने इतना पोर्शन क्रिएट किया है. यू कैन सी हमने पिक्चर उसमें डाल दी, बैकग्राउंड में हेडर में डाल दी. देन दिस थिंग, इस चीज़ को अब हम स्टाइल भी देना पड़ेगा हमें. क्यों? क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर कि इसके पीछे ब्लैक पोर्शन था, ये टेक्स्ट सेंटर में था और टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट था, एंड इसको हम थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये तो सिंपल स्टाइलिंग है, सो इसको मैं साथ के साथ कर देती हूँ. बट द मेन थिंग, लाइक एज आई विल मूव फॉरवर्ड, आई विल बेसिकली शो यू डिफरेंट थिंग. कुछ स्टाइलिंग पार्ट हम आज करेंगे एंड कुछ नहीं करेंगे. वन मोर थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इज दैट फुटर भी हमारा अभी यहीं पे डला हुआ है, मेड बाय सदफ खान. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो एज सुन एज मैं एलिमेंट्स ऐड करूँगी अपने पेज पे ऑन द कोडिंग पार्ट, सो ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता जाएगा नीचे एंड लास्ट में पहुँच जाएगा. ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट ऑल्सो फोकस ऑन द स्टाइलिंग पार्ट ऑफ दिस कोड. ओके, cool. So yeah, let's start with the coding part. Okay, so yes, so what I'm going to do is, let me divide the thing into two parts. I'll divide it like this. Okay, let's do one thing. In this, what I'm going to do is, in this, open a CSS file, and I will just so that you can also understand the CSS part that is going on. Okay, cool. So let's start with the CSS part also. So as you guys already know that in the CSS part, what I'm going to do is, I'm going to I'm basically going to put some मैं basically अपना जो सेक्शन था उसका जो div था उसको कुछ वो दूंगी, लाइक क्लास दूंगी, एंड उसके बाद उसमें कुछ मैं स्टाइलिंग करूँगी. ओके, सो लेट्स डू दैट. सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इस div को हम क्लास दे देते हैं. ओके, क्लास, एंड लेट्स गिव इट टॉप. ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने टॉप को ओके top. Okay, so for this you remember for class what we do is we put a dot. Okay, so हम dot top करेंगे, इसलिए यहाँ पे error आ रहा है because top is a class. Okay, dot top, and इसके साथ साथ मैं also अपने footer को भी same styling देना चाहती हूँ. Okay, so मैं यहीं पे footer को भी styling दे दूँगी. Cool. Okay, so okay. Rules. Okay, we have not written rules. Okay, so let's do one thing. Background, सबसे पहले हम background color क्या करेंगे, let's make it black. Okay, then after this what we have to do is we have to select the color of the text. So the color of the text will be okay white or azure, we can put anything. And what we are going to do is हम text align center कर देंगे, center कर देंगे. Okay, and we'll give a little bit padding, थोड़ी बहुत padding दे देते हैं. So padding will be let's say 2% padding. ठीक है, so or what we can do is anything additional you think
Okay, I guess that's it. Cool. So let's do one thing now. Let's just save this also, Control S, and now let's see our page. हम अपना पेज पे देखते हैं. Okay. Hi G Mustafa. Okay, so can you guys see the page? Yeah, I hope that you guys can see the page now. So you can see okay, so हमारे okay इस section को नहीं मिला है. Let's see. I guess we have done some little bit mistake. थोड़ी कुछ mistake कर रखी होगी हमने. So okay, let's see that code and then we will then we will see what mistake we have done. Okay. So yes. Okay, Control S, style.css. Yeah, I guess it's fine, and let's see. Okay, let's see what's happening. Why we are not able to see what we wanted to see. Okay. Wait. Okay. Now you guys can see the screen. Yeah, I guess you can see the code, like you can see the web page now. Okay, so as you can see, I have done some CSS styling, but I can only see the styling reflected to the footer, और हमारा जो section में हमने class बनाई थी div पे, उस पे reflect नहीं हो रही है अभी. So there might be some problem. So we'll like move ahead with the code, and we will also see कि इसमें क्या थोड़ा बहुत error आ रहा है. It does happen sometimes that we do like get we do not like हमारा थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कभी कभी. सो ओके, लेट्स सी. Okay, so hello ma'am. Krish, yes, GFG will contact you back. अभी सिर्फ एक दिन हुआ है कॉन्टेस्ट हुए, एंड yes, and जिसमें कि भी कल was like yesterday was a holiday, so we will contact you. Don't worry for that, and definitely people will contact you, and you can there will be a verification, so don't worry for that. Okay. Now we are going. I'm going to see that again later on, that why I'm having this problem कि ये हो नहीं रहा है, and there might be something. We'll see that later on. We'll not stop. Let's just because CSS part में आज ज़्यादा focus वैसे भी नहीं करने वाली थी. Let's just focus on other elements that styling करनी पड़ेगी. Okay. Let's see that. I'll as I will move ahead, I will see कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस शुड बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऐसे हो जाना चाहिए था. बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू लाइक focus on next thing. So let's create another div tag for the nav bar. आप लोगों ने nav bar देखा ही था जिसमें different sections थे. So inside this we are going to have different sections. Okay. Like we'll be having multiple sections. So what we are going to do is, and हम होता क्या है, see, whenever you want to create a nav bar जो कि like आपके पूरे पेज को आपको बेसिकली जब आप उस पर क्लिक कर रहे हो तो आप उस वाले सेक्शन में चले जा रहे हो. सो दैट टाइप ऑफ nav bar इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ए टैग. ठीक है, आप ए टैग का यूज़ करके बेसिकली जो आपका जहाँ पे आपने वो कंटेंट लिखा होगा, जहाँ पे मैं वो शेज़म वर्सेस सुपरमैन या फिर वंडर वुमेन जो भी कंटेंट लिखूँगी, उस कंटेंट का सब कुछ मेरा मतलब उस कंटेंट का जो भी मैं उस कंटेंट को मैं एक आईडी दूंगी, एंड उस आईडी को यूज़ करके मैं उस बटन से लिंक करूँगी. ठीक है. सो बेसिकली कभी भी मुझे अपने पेज में नेविगेट करना है. सो फॉर दैट इफ़ आई एम क्रिएटिंग बटन्स एट द टॉप, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं उस कंटेंट को कुछ आईडी दूंगी, एंड मैं उस आईडी को यूज़ करूँगी टू नेविगेट
through that page. Okay, so let's do one thing. Let's create 5 A tags because as far as I remember, हमने 5 सुपर हीरोज का पेज, लाइक 5 लोगों का हमें कंटेंट बनाना है. सो लेट्स डू वन थिंग एंड यू गाइस, ओके, लेट्स जस्ट राइट ऑल द नेम्स, ठीक है, एंड लिंक हम बाद में कर लेंगे. सो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? शाज़म वर्सेस Superman. Okay, let's just create all of them and then we will focus on the styling and how to link that later on. Okay, so that's how we are going to create all the. Okay, so Superman versus Shazam. So let me just make. Okay, next is the Joker. Next one was, I guess, Wonder Woman. And next will be, I guess, okay, let me see. Next is Fallen Angel and then Red Hood. Okay, so it will be Fallen Angel. And then last will be Red Hood. Red Hood outline. Okay, so that's how we created all of them. And हम सब में href यूज़ करेंगे. बेसिकली when we will create these divs, जब मैं इनका टेक्स्ट लिखूंगी तब मैं इनको लिंक करूंगी and you're going to understand that. Just have a little bit patience. So once this is done, now the next thing is to write the paragraph to create multiple rows. So ये 5 जो भी 5 जितने भी हमने कॉमिक के कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है, सो 5 मल्टीपल रोज बनेंगी एंड इनसाइड ईच रो देयर विल बी 2 डिफरेंट थिंग्स. एक हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक हमारा इमेज बॉक्स होगा. ओके, सो अगेन इनसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट 5 divs फॉर 5 रोज एंड इनसाइड ऑल दीज 5 रोज देयर विल बी 2 divs. इसमें से एक div हमारा टेक्स्ट बॉक्स का होगा और एक div हमारा इमेज का. ओके, सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट दैट फॉर्मेट एंड उसके बाद हम सारा टेक्स्ट डाल देंगे बिकॉज टेक्स्ट मुझे इवेंचुअली वैसे भी पेज में से देख के ही लेना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऑल्सो गिव अ कमेंट ओवर हियर and I'm going to write row 1. Okay, so that's how I'm going to like do. And inside this what I'm going to do is I'm going to create I'm going to create 2 another divs. One will be for text and one will be for image. Okay, div. Now inside this जब हम 2 div बना रहे हैं, if you remember for the first character पहले हमारा text box था, फिर image. Second में पहले image थी, फिर text box. So इस तरीके से alternatively you have to manage that. Okay, so what I'm going to do is I'm going to just first create the format. मैं पहले format बना दे रही हूँ and then we will create this. Okay, so now what I'm going to do is because we have 5 characters, so हम 5 row बनाएंगे. So what I'm going to do is I'm just going to copy this and paste this. Okay, Control V and Control V again V4 and 5. Okay, so this is row 1, this is row 2, this is row 3, this is row 4 and this is row 5. Okay, I am basically trying to tell you how whenever you see a page, कभी भी जब आप एक वेब पेज देखते हो तो कैसे आपको डिफरेंट चीज़ें ब्रेक करनी है एंड उसके बारे में सोचना है एंड उसको क्रिएट करना स्क्रैच से. ओके, सो फॉर द फर्स्ट वन ये वाला जो हमारा ये जो हमारा होगा दैट विल बी फॉर टेक्स्ट. ओके, this will be for text and again what I'm going to do is this will be for image. Okay, second div में हम image डालेंगे. Okay, image, cool. And here first one will be for image. What I'm going to do is I'm just going to copy this. See, पहले में
sorry guys, if you guys remember the page, तो पहले जो पहला सुपरमैन वर्सेस शाज़म का रो था उसमें पहले टेक्स्ट था देन फोटो था, देन जो नेक्स्ट जोकर का सेक्शन था उसमें पहले पिक था देन टेक्स्ट था, देन आफ्टर दैट वंडर वुमन में पहले टेक्स्ट था बाद में पिक था. तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली यू हैव टू लाइक डिसाइड, उस हिसाब से आप डिव्स क्रिएट करोगे. ओके, सो लेट मी जस्ट कॉपी दिस. ओके, सो ये सेकेंड वाले में पहले इमेज है बाद में फोटो, फिर थर्ड वाले में अगेन इमेज बाद में है, देन फोर्थ वाले में अगेन इमेज पहले है, एंड देन लास्ट वाले में अगेन इमेज बाद में है, एंड द रेस्ट divs are for text. So I'm putting these comments so that ये confusing ना हो आप लोगों के लिए. Okay, cool. So yes, okay, ठीक है. सो ये हमने पोर्शन बना लिया अपना अलग अलग रोज का. नाउ लेट्स जस्ट पुट द टेक्स्ट एंड इमेजेस के लिंक्स. ओके, सो फॉर टेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम अगेन गोइंग टू गो ऑन माय page and I'm going to copy the text from there only, because I have taken that text from net. So what you guys can do over here is that you guys can also take the text from like take any text from there. Okay, doesn't matter. Okay, so here what you guys are going to do is inside each text again you are going to have two tags. One will be h2 tag and one will be this p tag. Why two tags? Because आपको पहले heading देना है and then आपको वहाँ पे okay, as you can see over here कि आपको पहले heading देना है. ओके, पहले आपको heading देना है and then आपको पैराग्राफ लिखना है उनके बारे में. cool. सो यस, ये आपका टेक्स्ट का हो गया पूरा. देन आफ्टर दिस इमेज के लिंक्स हम बाद में डालेंगे. ओके, और मे बी लेट मी जस्ट पुट द इमेज लिंक ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले चीज़ें कैसे दिख रही हैं. ओके, सो इनसाइड सेकेंड वन अगेन यू आर गोइंग टू पुट टेक अ img tag and again you are going to use src to write the to like put the image over there. Okay, image रखने के लिए आप इस तरीके से करोगे. So what you are going to do is you are going to put the link of the image. Okay, cool. So ये आपका text हो गया, ये आपका image हो गया. So let's do one thing. Let me just save this, Control S, and let me just get to the web page. हम web page पे जाते हैं and let's do one thing. What I'm going to do is let me just show you the page. Okay, so I hope that you guys can see the page. ओके, सो या यू गाइस कैन सी द पेज. सो हमारा ओके, अब ये चीज़ अप्लाई हो गई. आई टोल्ड यू कि कुछ प्रॉब्लम होगा. नाउ यू कैन सी दिस थिंग इज अप्लाइड. हमने इमेज डाल दी अपनी हेडिंग में. ओके, देन हमने ये वाला सेक्शन बनाया, सेक्शन में सबसे टॉप वाला सेक्शन बनाया. देन उसके बाद हमें नैव बार बनाना था. तो बेसिकली इसमें हम स्टाइलिंग करेंगे, पैडिंग देंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे. इस तरीके से हमारे डिफरेंट ये बटन्स बनेंगे. अभी ये कंप्लीटेड नहीं है, सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट. बट इफ़ यू विल सी द मेन पेज इट इज़ समवट लाइक दैट ओनली. बेसिकली यही चीज़ें हैं बट इस तरीके से नहीं है, राइट. सो वी आर गोइंग टू डू दैट, डोंट वरी फॉर दैट. एंड आफ्टर दिस इन द मेन पेज एज यू कैन सी दैट हमारा पहला पैराग्राफ ये है, लाइक सुपरमैन वर्सेस शाज़म, एंड उसके बाद ये पूरा पैराग्राफ है. देन ये इमेज. सो यहाँ पे ये एक ही रो में है. मैंने 5 रो क्यों बनाई अगेन आई विल टेल यू, बिकॉज वी हैव 5 रोज, 1 2 3 4 and 5. Again the text and the image that you are seeing ये different line में है, but इसको हमें साथ में करना है. So that is something that will be done with the help of a property that is called as float property. ठीक है, CSS की float property की हेल्प से. So let's do one thing कि पहले हम सारा टेक्स्ट, सारी इमेजेस लाइन वाइज हम डाल देते हैं अपने पेज पे, एंड देन उसके बाद उसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टाइलिंग. ओके, सो लेट्स गो टू द वेब पेज. And yeah, let's go to the second section. And इसमें अब what I'm going to do is again we are going to put the image first, क्योंकि second वाले box में पहला हमारा image का section है. Okay, first we are going to put the image and then we are going to put the text. Okay, so let's just put the image. So for that what you are going to do is again you are going to put the img tag and img space src and then the link of the image. So img space src and then the link of the image. Now in the text section again you are going to have a h2 tag for the heading and then a p tag for the paragraph.
मल्टीपल चीज़ें कैसे पेस्ट कर रहे हो? मे बी राहुल थोड़ा सा लैग हो रहा होगा नेट इशू, इसलिए आपको एक साथ ज़्यादा चीज़ें पेस्ट करी हुई दिख रही हैं, ठीक है? So what I'm going to do is I'm going to put h2 tag, and inside this I will be writing what like the next thing is the joker, okay, and okay, let me just put this joker, ठीक है? And then after this हम एक p tag यूज करेंगे, and for p tag what I'm going to do is I'm going to just add the content. So content web page से ले लेते हैं, okay? So for that, okay, let me just go back to here, okay? So for Wonder Woman, for Joker we have 2 p tags, basically हमारे 2 पैराग्राफ्स हैं, so हम 2 p tags में रखेंगे सारा कंटेंट, cool? So this is the first paragraph, and let me just break it. And हमारा एक और पैराग्राफ है, so we are going to put 2 paragraphs because for Joker हमारे 2 पैराग्राफ्स थे, okay? And let's just also make another paragraph, p tag, okay? And यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ पुट कर देते हैं, okay, cool. So you guys just quickly put all of this that I told you, जो भी मैंने बताया है इस सबको आप like लिखना शुरू करो, and let's just complete this part, and after this we are going to focus on the next thing, that is the styling of the page, okay? So the next thing is, again we are going to have h3, okay, right. Now in the row 3rd we are going to write about Wonder Woman, so here we are going to have h2 tag, and again here I'm going to write Wonder Woman, okay? Now inside the div tag Wonder Woman, and again here after this I'm going to also write I'm also going to have a p tag, and p tag में हम paragraph लिखेंगे अपना, and okay, let me just take the so I would want you guys to quickly like complete this thing. Just take anything from the net से कुछ भी उठाओ, picture भी कोई से भी उठाओ, just use anything from the net and put the things like that, so that सब चीज़ें एक उसमें आ जाए, लाइक एक लाइन में आ जाए, जैसे मेरे पेज में दिखेंगे वैसे आपके पेज में रहें, सो दैट we can like together work on the styling part, because the main important part is using the float in property, जिसकी वजह से your page will look in a certain way. So let's write all of this together, ठीक है? You guys can also write, and अगर थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ तो आप मुझे बता दो, मैं थोड़ा स्लो डाउन कर लूँगी या थोड़ा वेट कर लूँगी for you guys to like cover up. So here for this again I'm going to have an img tag, and img में again we are going to have src, then src, and then we are going to paste the link of the image for Wonder Woman. So for Wonder Woman again we are going to okay put the image, okay? So इमेज का लिंक अगेन नेट से आप कोई भी इमेज ले सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी ये सारे पिक्चर्स की इमेज हैं जो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए हैं, सो आई एम जस्ट टेकिंग दोज इमेजेस का लिंक, okay? So let's just complete the row 4 and row 5, and as soon as we'll complete that then we can focus on the styling part, ठीक है? उसके बाद हम स्टाइलिंग पार्ट, सो बिफोर गोइंग टू द CSS पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफरेंट IDs एंड क्लासेस दोगे फॉर व्हाट, लाइक यू आर गोइंग टू गिव ऑल दोज IDs एंड क्लासेस, ठीक है? सो नेक्स्ट इसमें भी हम img टैग यूज करेंगे. लेट्स जस्ट क्विकली कंप्लीट दिस, एंड उसके बाद फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं.
cool. And one more thing, मैंने इसको close नहीं किया है शायद इन tags को. Yes. IMG tags को close भी कर देना students please. Okay, then for the last one again we are going to put the content. So let's just put the content over here. What you can do guys is that you can like if you're trying to create any page, ठीक है, आप कोई पेज बनाने की कोशिश कर रहे हो एंड आप उसको जस्ट कॉपी कर रहे हो, सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, एंड उसको इंस्पेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली उसको वो कर सकते हो, मतलब उसका वो सब कुछ देख सकते हो. बेसिकली उसमें जो कुछ भी आपने can you adjust paragraph using setting? In the setting there is an option to or adjust paragraph. Okay. Okay, so let's just put like all the different things. Okay, and p tag, and here again for text you are going to use h2 tag and a p tag. Okay, again for this image I'm going to create an img tag. Okay, so let's do one thing guys, that please for the next class please complete this much part, and once next class में जब भी आप लोग आना तो इतना पार्ट कंप्लीट करके आना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम कैसे नेविगेशन बटन्स को अटैच करते हैं. सो लेट मी टेक यू टू द पेज. ओके, लेट मी टेक यू टू द पेज एंड लेट मी जस्ट test this. Okay, now you can see the page. So next class में we are going to see कि हम ये हमारा जो पेज था वो कुछ इस तरीके का था. So okay, let me go to my page first, and here let me save this much part and let's go back again to this. Okay. So here you can see कि हमने पिक्चर्स डाल रखी हैं एंड हमने टेक्स्ट भी डाल रखा है और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड होना है. So let me take the text from here. So for the third one again the heading is Wonder Woman. So I guess there is little bit mistake I have done. So इसके बाद like after this again the paragraph is this, and let me not just do this, Control X, let me put it here. Okay, and then for row 5 again I'm going to have a h2 line, and again let me just quickly do this, and then we are going to focus more on the structure part, that how we can structure the whole the whole thing. Okay, so yeah, so that's it I guess. Okay, let me also get the link of the image for the last one, and let me just get the link for this. Copy image address. Okay, address, and let me put it over here. Okay, so yeah, so that's it I guess. अब अगर आप पेज देखोगे हमारा
So this is what we have created by now till now. So now what we have to do is कि हमें अपने सबसे पहले let me just show the comparison and see अब हमें क्या क्या करना है. सबसे फर्स्ट थिंग टू डू दिस थिंग कि हमें इनको बटन्स बनाने हैं, हमें इनको लिंक करना है. सो सी इफ आई विल क्लिक ऑन वंडर वुमन, आई विल गो ऑन वंडर वुमन. ठीक है, इफ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस रेड हुड आउटलॉ, देन आई एम गोइंग ऑन दिस. सो बेसिकली हम इन डिव्स को आईडीज देंगे एंड यूजिंग दोज आईडीज वी आर गोइंग टू लिंक दैम. हमने, आपको याद है ये चीज़ हमने ए टैग में क्रिएट की थी, इसीलिए ए टैग में क्रिएट की थी बिकॉज वी आर गोइंग टू लिंक them. Okay, now another thing that we are going to learn in tomorrow's class will be how to manage these two divs. So basically if you remember, div हमारा पूरा रो कवर करता है, राइट. बट इफ यू see this page, this is one div. if you will see this, ये एक div है, ये एक div है, बट हमारे पेज में ये दोनों साइड बाय साइड है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ फ्लोट प्रॉपर्टी. सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू टुमारो एंड थोड़ा बहुत लाइक मे बी लिटिल बिट मोर स्टाइलिंग, बट आई गेस या दैट्स इट. एंड हम लोग का यही इतना ही पार्ट रह गया है. एंड बेसिकली स्टाइलिंग these buttons, linking them with the text, and how to get this text and the image side by side, or you can say image and the text side by side using float property. So that is something that कल Saturday है class होगी. No, कल नहीं, I mean Monday. कल से I mean Monday. Monday will be next class. Okay. Okay students, okay guys, so I will see you on Monday and we will complete this project and then we will start with a new project. Okay. Okay, yeah, that's it for today's class. Okay, I hope that you guys have liked this class and have understood things, and if you have any doubt you guys can ask the doubts, otherwise I'll just end the class. If you guys have any doubt, can quickly ask the doubt, otherwise I'll just end the class. And if you guys have liked the video, please click on the like button and share it with your friends. Yeah, okay everyone. Okay everyone, then in that case I guess no one has any doubts, so I'll see you in the next class. Bye bye everyone. Bye.